All right. Very good evening, everyone. Priyadarshini, Upendarjit. Very good evening. Let us wait for 2 more minutes so that others can also join. I hope now there is no problem. Yesterday, I intentionally kept it off. I have rescheduled the class because I needed some things to set up because we wanted to have, you guys were asking me class notes and all. So today I'll show you the sample of it, how to write. I'm going to share the same with you as well. Then for the further classes as well, I need to sort out some things, so that I have taken care of. Very good evening, Naveshri. See, two things first before I start the lecture. You guys told me, sir, related to your daily answer writing, okay? Daily answer writing. So this is taken care of. I have spoken to Jatin sir and the concerned person. They said by Saturday they will solve the issue. So we will be having a dedicated group, or at least we will have one dedicated mail ID where you guys can share your answers, daily answers, and I'll correct and send it you back to you, and I'll give the feedback in the class itself. Okay, so we have that. So that is sorted out. Second thing, you guys were asking me the class notes. See, for this class notes, what I'm thinking is PPTs you will get it, both annotations and without annotations. That I have talked to the concerned person. He will be updating it as soon as we are done with the class. So within one day you will get everything. And apart from that, for some material, like for some chapters, I will provide you my notes, the notes which I have written, my handwritten notes. I'll try to give it to you. So I hope that will be good. And apart from that, some of the handouts will be given to you. I'll be making those handouts and I'll give it to you. So that is your second query. It has been addressed. And third query is Ayush. Yeah, Telegram group is there. So in that group, they will add me. Okay. So I'll be there. At least, or they will communicate with me what is happening in that group. Okay. We will do that. Yes, Navya. And the third one is reference books. So this is asked by Ayush. Is he here today in the live? I think not yet. Okay. And similarly, we have one more student, Gautam Pandey. Mostly by now he might have got the information. So soon he will join us. Okay. So all of you, see, let's keep it very plain and simple. Let's not there be any kind of miscommunication. So if there is any sort of emergency based cancellation of the class, I will let you know. Otherwise, the timing will be fixed as we have agreed upon. It will be from 6 p.m. to 8 p.m. Okay, and it will be from Monday to Friday. Okay, so initially for maybe I'm thinking initially for some days like 10-15 classes, we will go with Monday to Thursday, and Friday let us have one interactive session. Okay, either it may be for half an hour or so. Let's have either Zoom session or let us say Google Meet. So I'll talk to the managing person related to this. Let's have a session, interactive session, where you can interact with me on voice basis, and any of your queries in that entire week related to the class or related to answer writing, related to anything, you can ask me. I'll resolve them. Okay. So for some days, let us go this way. Let us create that bond between the faculty and the students. Then once you are adjusted to the my way of teaching, once I get to know what is your expectation, then there is no need for these things. We will have one-to-one interactions or even group interactions every now and then, so that we can clarify our doubts. So that's the plan. Yeah, Navya, your answers, I got to know that you guys have sent answers, you have sent the pictures. Okay. The person has told me, but they will forward it to me. So far they did not forward. They will soon forward it to me. I will correct and I will give you the feedback. Okay. Yes, Upinder, your answers, right? Okay. We will do that. No problem. Now,
I hope that's enough of introduction, and I think all your queries have been addressed. One is related to your class notes, that is addressed. Second is related to your daily answer writing, that is addressed. Then third is reference books. This was yesterday asked by Ayush. Was asking, sir, what are the reference books? See guys, we have, for example, paper 1. When I am talking about paper 1, okay, we have broadly two subdivisions. One is physical anthropology or biological anthropology. Second one is socio-cultural anthropology. ठीक है, इसमें भी सब डिविजन्स है. So for that, what I am suggesting is let us not stick to one particular book, क्योंकि नैरो हो जाएगा, उसका लर्निंग जो है नैरो हो जाएगा. Let's diversify the content, but we will not be going for like say 7 or 8 books randomly. Rather we will be referring to that particular content from that many books. कि कुछ बुक्स का कुछ मटेरियल बहुत अच्छा होता है, उसमें जो केस स्टडीज है और द एग्जांपल्स दे आर वेरी वेरी गुड, नॉवल एग्जांपल्स मिलेंगे. सो वी विल ट्राई टू गो विद दैट. सो फॉर दैट आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स. ओके, सो फर्स्ट टुडेज लेक्चर, एंजॉय दिस. दिस इज लाइक द वेरी बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी वन. इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है. सो टिल हियर यू एंजॉय. फ्रॉम 1.4 यू विल बी नीडिंग द बुक्स that I will be giving you. नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं रेफरेंस बुक्स आपको बता दूंगा, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी. पेपर 2 थोड़ा सा डायनामिक होता है, सो दैट वी हैव टू सप्लीमेंट विथ योर करंट अफेयर्स. पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में ट्राइबल से रिलेटेड या एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड. अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ न्यूज़ रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, DNA, genomic sequencing of Indus Valley civilization people, so that to find what is the race of that people, उसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल था. Similarly there was like dairy product residues in that particular one, तो उससे related कुछ न्यूज़ था. ऐसे चीज़ें we have to collect and we have to use them appropriately, जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर. ठीक है. सिमिलरली ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स है या कुछ इनिशिएटिव्स है या कुछ केस स्टडीज है, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, दोज थिंग्स कंटेम्पररी वंस वी विल गैदर, वी विल कीप देम असाइड एंड अप्रोप्रिएटली जहां पर नीड है वहां पर वी स्टार्ट यूजिंग दिस. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you guys need to cover 2 more things. One is one edition of Yojana. ठीक है, that is everybody refer to that 2014 I think August month edition, or so I forgot actually. every month का योजना का एक theme होता है. ठीक है. So in that particular month the theme is on tribals and this anthropology and all, so that we have to refer. Then there is this Kaka report, Virginius Kaka report. इसमें भी पेज टू पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. सी whenever I am referring some book, whenever I am saying some material or book, I won't say, I won't suggest, I won't recommend covering it from line to line or page to page. You have to be smart, because here you need knowledge, at the same time you need to get marks and you need to clear the examination. So you have to optimize that time management. ठीक है. So for that we will take those things, and I'll also give you some of the case studies and examples which I have compiled and I have been compiling. So those handouts you can keep it and you can use in your answer writings. ठीक. So that is related to all of your queries. And yesterday for these material and then reference books and all, and for setting up of this, you might be seeing today's output is much better. ठीक. So for this I kept it off. ठीक. So now let us go regularly. And you guys, I have only one request to you. Due to some personal reasons, if you are not able to take the live, that's fine, but try to cover it. ठीक है. Either recorded session, you will be getting the access of these recorded videos. Cover it and have that continuity. Do not break in between, क्योंकि I'm going to connect the things. ठीक है. As we go forward, as we take up the classes, so some of the topics which have been discussed, I'll try to recall and try to connect them. The same interlinking of paper 1 will be done with the paper 2. Some of the examples will be taken from there to here and here to there.
So for that purpose, don't miss any classes. Even if you are missing the live, complete the recorded session before the next class, so that you know this entire timeline what is happening. So that's one suggestion. So with those things, let us enter into today's topic. Today's topic is, see, this is paper 1 1.3 section, which talks about main branches of anthropology. Now let me recall you the quickly what we have discussed so far. 1.1 we discussed about anthropology, meaning, scope, relevance and development. 1.2 we have seen how anthropology is linked with other branches of no other branches. It may be like social sciences or biological sciences, earth sciences or medical sciences, it doesn't matter, life sciences. So how it is linked with that. So यहाँ से 10 markers आएगा. This I have already told you, and I have given you one question as well for answer writing, and some work has been given to you, homework, how anthropology is linked with earth sciences. ठीक है, I hope you have written that as well. So if you have written, please share it, I'll review it. ठीक है, if you have not written, if you did not find any material, you just tell me, I'll provide it from my side. Okay, I have the written notes, I'll give it to you. ठीक है, so that is another thing. Now in this particular lecture, what we are going to look at is the main branches of anthropology. So if you have attempted or if you have attended the very, excuse me guys, sorry, some sort of disturbance. Yes, if you have attended the very first lesson, take a very first lecture, in that while discussing the definition of anthropology and scope of anthropology, I said that it mainly has 4 subdivisions. So today we are going to look at those subdivisions, what are their scopes and how relevant they are in the present times. That is our focus, that is our learning objective. Is that clear? If whatever that we have discussed so far, if it is clear, just type yes, yes sir, okay sir, or whatever. Okay, just give me a confirmation, we will go ahead. Okay. Okay, we have a new student today, Sonia. Sonia, where are you from? Ayush is also there. Okay, great. Sonia, this is your first lecture, I hope. Where are you from? Have you completed graduation and all? See, whenever some new student comes, try to interact. Let us keep it live. ऐसे नहीं कि we are virtually interacting. So it should be like better. It would be better if you are interacting with each other and even with your fellow aspirants. See, sometimes I will be giving you the tasks where you can cooperate with your fellow aspirants. समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका फ्रेंड जो पॉइंट्स लेकर आएंगे रिसर्च करके, दोज पॉइंट्स विल like enhance your content. ठीक है, so that is the reason why we will go with that mutual learning. So you can always interact with your friends. Let's clear it together. I'm like, my goal is whoever, like, we will be taking very less number of students, whoever that are there in this, they have to get very good score and they have to get, okay, they have to get selected with a very good rank. All of you should become your, like, whatever your dream service is there, IAS, IPS, IFS, whatever that is, you should get it. So for that, let us target like 300 plus 320 350 up to 350 marks in anthropology. Okay? So for that, from my side, I'll put 100% of efforts, and I expect the same from you as well. Of course, I expect 200% from you. If I'm putting 100%, you have to put 200%. Yes, Sonia, you are from West Bengal. We also have a boy from West Bengal. His name is Gautam Pandey. He's absent today, I think. Okay. And Ayush, where are you from? Upinderjit, I know she is from Punjab, and Navyasri from Andhra Pradesh. Okay. Ayush?
See, the reason why I am asking is from your locations, I'll find some case studies, important examples, which you will definitely appreciate. Okay? That is the reason why I'm asking these areas. Okay. All right. Let us begin today's lecture. Let us try to understand what are the main branches of anthropology, their scope and relevance. Okay. Madhya Pradesh. Great Ayush. Madhya Pradesh has lot of tribals. ठीक है. ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. देर आर मेनी ट्राइबल पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश. सेंट्रल बेल्ट में ऑलमोस्ट 2 crore पॉपुलेशन आर फ्रॉम मध्य प्रदेश. ठीक है. वी विल लुक एट बाइगा कम्युनिटी. ठीक है. गोंड कम्युनिटी, बिल कम्युनिटी. ठीक है. So many communities are there from Madhya Pradesh. We will look at them. We will look at their lifestyle, and we will try to understand from their perspective what is society, what is their society and culture. All right, let us begin. The first one, see, by now you already know what is anthropology. It is the holistic study of humans. Now, when we are saying holistic study, it will be having lot of applications because humans are involved in many great number of fields. Wherever humans are involved, anthropology will raise the hand and says, I am here to study about you. So that is the reason why anthropology also has many subdivisions. And these subdivisions, see, there was one time, there was like lot of confusion with respect to these subdivisions. कितने branches करना है? क्या मतलब we are saying 4 subdivisions. Even within these 4 subdivisions also there are many further subdivisions. Okay, तो जब इतने सारे थे confusion था कि कैसे इनको, how can we put them in a systematic manner. So then one of the anthropologists, his name is Franz Bowers. Franz Bowers is an important person. We will study about him in the diffusion theory and all. He has many anthropological students, great anthropologists, and they have contributed a lot. Okay, we will understand about him. So he has given 4 field division of anthropology. So he has subdivided anthropology into 4 subdivisions. What are those subdivisions? First is biological anthropology or physical anthropology. See, biological और physical दोनों same है. Biological anthropology or physical anthropology, because it is the branch of anthropology which studies about human biological features. जैसे what is my body shape, what is X body shape, why that body shape, what is the tallness, what is the amount of fat, what is the stature, what is the skin color, hair texture. ऐसे जो physiological features के बारे में study करता है. Okay, and similarly what is the genetic composition, how certain genetic features are hereditary or inherited from one generation to next generation. All of that is studied by this important branch which is called biological anthropology or physical anthropology. Then second important branch is socio-cultural anthropology. First one is biological anthropology. Okay, second one is socio-cultural anthropology. See, simple thing, humans, generally anthropology considers human as biological organism. That means an organism with life. Bio means life. ठीक, humans are considered as biological organism. At the same time, because of the nature of humans, we are all social beings. See, isolation में नहीं रह सकते हैं. कुछ दिन के लिए जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, so in that lockdown बहुत लोगों का दिमाग खराब हो गया था, right? So they are like always social beings. They wanted to interact, they wanted to be in the group. So because of this group behavior, they have a distinctive style of living. This distinctive lifestyle or the way of life is called culture. The way how they are living, the way how they are behaving, the manner in which they are behaving, all of this is part and parcel of their culture. So human beings, they have culture and they always live in societies. So now
we need to study about these two important elements because they have societies, they live in societies, they have culture. So अगर ये दोनों they are intrinsically linked to the human beings, then if you are to study humans holistically, you need to study about the culture and their societies. That is how this second branch, which talks about socio-cultural behavior of the humans and the group behavior of the society, comes into picture, and which is studied, which is examined by a branch of anthropology called socio-cultural anthropology. Now if you see, यहाँ पर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी रखा हूँ, ठीक है. सो दैट्स बिकॉज सम, देखो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थीरीज तक जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा. एंथ्रोपोलॉजी जब डेवलप हो रहा था, सी इट डिड नॉट डेवलप लाइक होलिस्टिकली एट वन पर्टिकुलर लोकेशन. देयर वर मेनी स्कूल्स. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल, फ्रांस एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे जब ये डेवलप हो रहा था, सो वहाँ का जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्टडी करने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, दे हैव देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ देयर व्यू दे स्टार्टेड डिफाइनिंग सर्टेन थिंग्स. That is how some people say there is no requirement of the society. Humans exist because of culture and societies are existing because of the culture. ऐसे बताने वाले भी हैं कुछ लोग. इसलिए ये वाला डिबेट था. कुछ लोग कहते हैं इसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी. एंड फाइनली इंडियंस, जब इंडियंस तक आ गया, then we started saying that it should be because society cannot exist without human beings, and human beings, they have intrinsically culture with them. So this society and culture, both of them are existing together. If there is a society, then definitely there will be a distinctive culture of that society. If a cultured human being is there, that person cannot live in isolation or alone. So he must have a society. So that is how one and two are always interlinked, and that is where this broader term, the name socio-cultural anthropology name has been given, and this has developed as a separate stream under anthropology. So this is second stream. Now coming to the third one. See, third one is the oldest one in the anthropology. Initially ऐसे था कि anthropology का मतलब कुछ लोग मानते थे कि it's archaeology, it's a part of archaeology, ऐसे मानते थे. तो ऐसे ही एक ब्रांच है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट वन. इवन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ है 200 साल पहले, ठीक है. इवन 200 साल भी नहीं है, 100 साल का बोल सकते हो आप. 20th सेंचुरी में जब जेनेटिक्स वगैरह ज़्यादा डेवलप होने लगा, तब से बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो गया. उससे पहले इतना नहीं था. उससे पहले ओनली दे वर मेजरिंग इट, ठीक है. जैसे फिजिकल मेजरमेंट्स वगैरह लेकर कंपेयर करते थे, बस बोन वगैरह, स्कल का, ये क्रेनियल कैपेसिटी का, इनका कंपैरिजन करते थे. जेनेटिक्स का, जेनेटिक वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट वगैरह जो है 20th सेंचुरी में आया था. इसी को कहते हैं न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जब से जेनेटिक्स आने लगा, ठीक. नाउ आर्कियोलॉजी जो है, दैट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच. जनरली व्हाट इट डज इज इट स्टडीज अबाउट द पास्ट रिमाइंस, मतलब एंशिएंट रिमेन्स, एंड इट इज अबाउट ह्यूमंस, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी पूरा ह्यूमंस है. सो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है, दैट स्टडीज द पास्ट और प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर थर्ड ब्रांच, विच इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. Okay, so what is this linguistic anthropology? Linguistic anthropology का मतलब है, जैसे language, see initially if you see for almost 99% of the human life, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन का लाइफ जो है it started existing around 2.5 million years ago मान लेते हैं, वहाँ से लेकर आपका अपर पैलियोलिथिक एज तक ऑलमोस्ट 2 लाख 2 लाख ईयर्स अगो तक, यहाँ तक लैंग्वेज नहीं था. दे वर कम्युनिकेटिंग, बट द कम्युनिकेशन इज मे बी vocal communication, giving some sort of signs, sign language. This sort of communication used to be there.
language started developing कि in this upper Paleolithic period, like 40,000 years ago, upper Paleolithic and lower Paleolithic, or together you can say Paleolithic age 2 lakh years ago, वहां से स्टार्ट हुआ था. देन बाय द टाइम आपका नियोलिथिक पीरियड और मीसोलिथिक पीरियड, लेटेस्ट से मीसोलिथिक पीरियड आया, तब तक कॉम्प्लेक्स सिंबल्स वगैरह डेवलप हो गया है, बात करना, कम्युनिकेशन वगैरह चल रहा था. देन लेटर नियोलिथिक पीरियड एंड देन चालकोलिथिक पीरियड तक स्क्रिप्ट भी धीरे धीरे से डेवलप होना स्टार्ट हो गया था. स्क्रिप्ट मतलब रिटन फॉर्म में. ठीक है, तो ऐसे डेवलप होकर आया है. नाउ लुक एट अस, वी हैव वेरिड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस with so many dialects. We speak so many different languages with the different pronunciations, with the different phonetics and all. So itna diversify ho gaya hai. So that is the reason why a separate branch in anthropology came into being to study this language. How this language came into being, what is the origin of this language and how it transformed, what is the use of it. लेकिन यहाँ पर you have to remember one thing, सेम चीज करने वाला एक है लिंग्विस्टिक्स करके, लेकिन उसका और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज्यादा फर्क है. लिंग्विस्टिक्स जो है वो ग्रामर और मतलब पहले ये आया हुआ है वो चीज को ग्रांटेड ले लेता है, फिर डेप्थ एनालिसिस करता है कि ग्रामर क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्यों आया है, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, दूसरा जगह पे क्या मीनिंग होता है, ऐसे. बट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये है, इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the importance of language from the social and cultural perspective. मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर थिंग किसी चीज को दे रहे हैं हम, तो why we are giving this color to it, what is the significance, social and cultural significance of it. See, for example, there are some certain primitive societies, अगर उनको मतलब कोई भी जूसी चीज, जूसी स्वीट वाला बताना है, so they always represent it with yellow color. ठीक है, मे बी मैंगो येलो कलर में है या कुछ वॉट एवर दे कंज्यूम, स्वीट जो है वो येलो कलर में होगा. तो अगर उनको कुछ जूसी स्वीट चीज के बारे में बताना है तो दे ऑलवेज ट्राई टू लिंक इट विद येलो कलर. ठीक है, सिमिलरली यू नो दिस इज वेरी वेरी कॉमन टू यू एज वेल. मतलब हम भी नॉर्मली ये वाला यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का गुस्सा या सर्टेन पर्सन इज एंग्री, ये वाला रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज रेड कलर. ठीक है, मतलब जहां पर मुंह से नहीं बोल सके, रिप्रेजेंट करके दिखाना है, वहां पर रेड कलर वगैरह यूज करके बताते हैं. तो व्हाई रेड कलर इज एंग्री, व्हाई रेड कलर इन डेंजर. अब देखो ट्रैफिक सिग्नल्स में ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स की सेफ टू गो, रेड कलर है तो यू हैव टू स्टॉप, इट इज डेंजर नाउ. ठीक, व्हाई, how this has come into being, how people like universally believing that red color is some sort of danger. ऐसी चीज पढ़ने में मदद करेगा आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ओके, सो दैट इज व्हाट इट फोकसेस, and it focuses mainly on study of language, symbols and the features of the human communication. So this is what linguistic anthropology does. So these are the four main branches of anthropology. Now see, when we are saying it is a branch of science, that too a branch of biological and social science, if we are saying this, then it must be having some applications. कि applications के बिना सिर्फ theory है तो कोई मजा भी नहीं आएगा वो वाला. So whatever the science that we study, it will be having definitely some applications. इसी तरीके से anthropology का भी बहुत सारे applications है. So all of them, like it may be from archaeological anthropology, biological anthropology, socio-cultural anthropology, linguistic anthropology, economic anthropology, political anthropology. So whatever it may be, all of them have some application. So that all together we can study under applications of anthropology or applied anthropology. ठीक, so these are the main important branches. यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ. If no doubt, just type, we will go ahead. Yes, Sonia, red color has maximum wavelength, that is true. So that it will be having left WebGR. Let me tell you this, white light में हमें 7 colors होता है, WebGR. ठीक है, जैसे ये नीचे आता है रेड कलर जो है इसका वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, तो डिफ्रैक्शन जो है वो कम होगा, और रेड का जो है वो वहीं पर. दैट इज साइंटिफिक रीजन व्हाई वी आर यूजिंग रेड कलर इन ट्रैफिक लाइट्स.
योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, दैट इज ट्रू, बट जनरली इन द सेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. मे बी इट माइट बी सो दैट ब्लड इज इन रेड कलर, so something danger happens, blood will come and that indicates the danger. That's the reason why. ठीक है, ये वाला वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट वगैरह हमें पता है. द मॉडर्न पीपल who know about science, who know about electromagnetic radiation, electromagnetic spectrum के बारे में जिसको पता है उनको पता है. I'm talking about those people who lived on this earth say 10,000 years ago. ठीक है, हमें कुछ केव पेंटिंग्स वगैरह देखेंगे मीसोलिथिक पीरियड से कुछ केव पेंटिंग्स या नियोलिथिक पीरियड से कुछ केव पेंटिंग्स देखेंगे. वहां पर दे हैव यूज्ड डिफरेंट कलर कोड्स. डू यू नो, दे हैव यूज्ड डिफरेंट कलर कोड्स. कुछ पर्सन्स को रेड कलर में पेंट किया है, कुछ पर्सन्स को ग्रीन कलर में, कुछ पर्सन्स को व्हाइट कलर में पेंट किया गया है. टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. ठीक है, सो हाउ दैट केम इनटू बीइंग, ऐसे चीजें यहां पर एनालाइज कर सकते हैं हम. ठीक है, इज दैट ओके सोनिया? Now guys, Ayush, Upinder, Navya, Sonia, if any doubt in this particular one, just type it and I'll address. Otherwise we'll go ahead and we will try to study each of this branch in depth. Let us look at the scope of it. Let us look at the relevance of it. And one more thing, did you guys get this notebook? All of you? Did you get it? ये वाला मिल गया ना? ओके, प्रियदर्शनी, ओके. Even the extreme of emotions are shown in red. True, that is true, Upinder, right? Okay, great. So you guys got this note. See, this is a note which I have written while like initially I was preparing and I was making that initial batches को जब पढ़ा रहा था, then I have made this. You can. अच्छा, आयुष आपको नहीं मिला है? ठीक है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ. क्लास के बाद तुरंत मैं उनको पहुंचा देता हूँ. आई हैव ऑलरेडी मेल्ड देम. तो आपका टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला शेयर कर देंगे. यू जस्ट ओपन दिस नोट एंड जस्ट लुक एट इट. सी, आपके पास कितने भी नॉलेज हो, finally when it comes to the examination, the way that you represent your knowledge, that is what is going to matter. So representation के लिए and clear cut point बताने के लिए you need to have little bit of practice, note making and all. ठीक है, so for that I am giving these sample notes, so you can keep it as a reference. On these points you can make your notes through the reference books, through or telegram group में send कर देंगे. ठीक है, through your it can be through your what you can say Venn diagrams or flow charts or whatever the points, bulletins and all, you can represent your answers in this manner. So that is the reason why I have given you this. See, look at it, what I have done. The main branches of anthropology, okay, under which I have divided this into these 4 sections, okay, in this manner. जहां पर फर्स्ट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, देन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ऐसे यहाँ पर डिवीजन करके लिखा हूँ. सी, दिस 4-fold डिवीजन इज गिवन बाय अ पर्सन नोन एज फ्रांच बॉस. ठीक है, देन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. लेट अस टेक नाउ one by one. What is सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी? What is बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी? व्हाट इज द स्कोप ऑफ इट? अंडर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करते हैं? तो इस तरीके से कवर करेंगे. द सेम पॉइंट्स आई हैव एडेड हियर इन एन एलाबोरेटिव मैनर. ठीक है, द सेम पीपीटीज भी मिलेंगे आपको और ये वाला नोट्स भी रेफरेंस के लिए है. सो ट्राई टू लर्न हाउ टू मेक द नोट्स एज वेल. ठीक है, एंड इन बिटवीन अगर आपको नोट्स बनाने में भी या आंसर राइटिंग में भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी. ठीक है, so I'll be available once I get that mail and mobile number. I'll be available. I'll help you out. ठीक है, okay, ये वाला नहीं मिला था आपको. I'll definitely talk to the person and you will get it. Okay, now let us go one by one and understand what are they. First and foremost, let us begin with biological anthropology or physical anthropology. ठीक है, दोनों का नाम सेम. ठीक है, now look at this. Under biological anthropology also we have various subgroups. For example, primatology
or paleoanthropology or molecular anthropology or genetics, human genetics, human biology, forensic anthropology, ऐसे different different important streams इसके अंदर भी है. But all of them are related to the biological features of the human beings or physical features of the human beings. That's the reason why all of them clubbed together and kept under biological anthropology. Now here what do we study? Why do we study? Why should we study? Simple है. Have you ever wondered why human beings are so diverse? ठीक है, दिखने में लुक्स में इतना डाइवर्स क्यों है? Why so much of racial no changes? Why so much of racial you can say differences? कोई गोरा है, कोई ब्लैक है, कोई मतलब टॉल है, कोई शॉर्ट है, या somebody is lean athletic, somebody is fat. ठीक है, so why such a differences? Did you ever wonder? Yeah, definitely you can Ayush, you can prepare notes from the PPTs, no problem. Even you can use my notes. I have no issue, no copyright claim I'm going to do. You guys are my students, I want to give you the best. You can use it, no problem at all. ठीक, you can prepare it. Yeah, tell me, do you ever wonder, okay, why such changes are there? ठीक, see the simple reason, if you know, like most of you will tell, the simple reasons are two things. Okay, one is the role of genetics, that is the genetic information which is passed to us by our parents. Okay, most of the features like skin color, eye color, hair texture, even to some extent height, ऐसे जो features है, even the body characteristic like somatotyping बोलते हैं हम, तो all of them they come from our parents, क्योंकि उनका जो genetic material हमारे पास आएंगे, मतलब when they pass on to our next generation, so that is how it comes to us. So that is one parameter. The second parameter is the environment. Yes, you are right, Upinderjit, you are right. These are the two things which bring those changes. Environment in the sense it can be your physical environment, मतलब आपका surroundings. देखो कुछ लोग ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं जहां पर सनशाइन ज़्यादा है. I'll give this example. Take this example and you can use it as a case study or example. So the people who are living in the tropical regions, वहां पर सनशाइन जो है throughout the year it is vertically falling, and because of this vertical incidence insulation will be more, temperature will be more sunshine will be coming. तो अगर वहां पर प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है तो क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगा. इसीलिए वहां पर क्या है, जो भी पीपल इक्वेटर के आसपास होते हैं उनका स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस एक्सेसिव सन देयर इज a पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन पिगमेंट होता है. ठीक, दिस पिगमेंट इज द वन विच गिव्स दैट डार्कर कलर टू द स्किन. ठीक है, जब ये डार्क कलर है तो जितना भी सनशाइन आएगा प्रॉपरली ये प्रोटेक्ट करेगा और सन बर्न वगैरह नहीं होगा. दैट इज द रीजन व्हाई द पीपल हु आर इन दिस इक्वेटर रीजन दे आर वेरी वेरी डार्क इन कलर, ब्लैक इन कलर. सिमिलरली द पीपल हु आर इन द टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन और हायर आल्टीट्यूड्स जहां पर सनशाइन जो है बहुत ही कम होता है, तो वहां पर देखो योर बॉडी नीड्स सनशाइन. क्यों? अगर आपका बॉडी में विटामिन डी बनना है, ठीक है, विटामिन डी इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट. अगर विटामिन डी बनना है तो यू नीड सनशाइन. कोलेस्ट्रॉल को रिएक्शन होकर देन विटामिन डी में कन्वर्ट होगा. अगर ये सनशाइन अच्छे से नहीं मिला तो आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाएगा, देन यू विल हैव बोन डिसीजेस एंड ऑल. सो फॉर दैट द पीपल हु आर इन द टेम्परेट रीजन and the people who are in this high altitude polar region, उनका स्किन जो है it has to be as thin as possible so that सनशाइन कम आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनेट्रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व हो, so that they can have good amount of vitamin D production. So for that they will be very very fair in color. So that is the reason. environmental setup का बात करेंगे तो, so this is one example for physical environment. Now coming to another set of environment is there, that is, let me say,
physical environment, another set of environment which is social environment. सोशल एनवायरनमेंट मतलब जिस जगह पे आप हो वहाँ का सोसाइटी कैसे है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का न्यूट्रिशन कैसे है. कई बार ऐसे होता है कि प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट नहीं मिला, देन द पर्सन में बिकम स्टंटेड और वेस्टेड, तो वो भी उनका हाइट पे, ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा. देन दोज पर्सन विल नॉट बी एज हेल्थी एज अनदर पीपल. ठीक, सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो दैट कम्स अंडर योर सोशल एनवायरनमेंट. दीज आर द मेन थिंग्स. ठीक है, नाउ ये वाला कैसे पता चलेगा हमें? बाय स्टडिंग द biological anthropology we get to know what are the biological features which are influenced by the genetics, which are influenced by the environment, which are influenced by the social setup. ठीक, so this can be studied and accordingly proper nourishment, proper environment and proper genes can be provided. If the genes are not good, ठीक है, तो वहां पर जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू उनको रोक देंगे कि डोंट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, यू हैव सर्टेन डिसीज, योर जीन्स आर नॉट गुड, वी नीड टू गो फॉर जीन थेरेपी, आपका करेक्शन करना पड़ेगा. ये वाला करके वी कैन ब्रिंग दैट चेंजेस, वी कैन मेक दोज करेक्शंस. ठीक है, सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक, सो लुक एट दिस. पैरेलली आई एम टेलिंग यू the meaning of biological anthropology, at the same time I'm talking about the scope and relevance of biological anthropology. ठीक है, तो try to learn the subject together, then एक बार subject समझ में आ गया, then according to the demand of the question you can write it. It will be your bread and butter then. ठीक, then look at it. This point I have told you. Biosocial adaptations, किस तरीके से biological adaptations या social adaptations लेते हैं, what is the role of them, that can be studied. So similarly, for different geographical locations, for different ecological settings, what differences comes in the human physiography, in the physiology of the humans. These things can be understood by studying the biological anthropology. Then similarly, the knowledge of different branches of biological anthropology will help us to examine how it deals with the human evolution and variations. क्योंकि see, आपका anthropology and even your science says that the organic evolution and humans have evolved from the apes. तो वहां पर क्या variations आया है, what are the adaptations we have taken, so that can be understood by studying these various branches. One of such branch is paleoanthropology. Let us go one by one. Now whatever the branches that I was talking about here, let us look at them deeply. Let us see how they are linked with the studying of the humans. Okay? The first one is primatology. See, इसका मतलब है कि primates plus ology, मतलब logos. It means ology और logos का मतलब है कि study of, this we know very well. So study of what? Study of primates. Now you might ask, sir, what are primates? See, primates are apes or it may be Prometheans. For example, Prometheans में आपका ये जो टार्सियर है, I'll include these images to tell you. टार्सियर का इमेज अभी यहाँ पर लेकर नहीं आया, but in future classes I'll definitely bring. While studying 1.4 section, I'll bring this tarsier वाला. ठीक, tarsiers, monkeys, apes में भी ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ऐसे वाले सारे, उनको कंपेयर करेंगे हम, उनका अनाटॉमी को कंपेयर करेंगे ह्यूमंस के साथ, टू सी व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड. क्योंकि हमारा क्लोज रिलेटिव्स है, हम उसको कजिन्स मानते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सबको कजिन्स मानते हैं, क्लोज कजिन्स ऑफ होमो सेपियंस. सो वी हैव सम सिमिलैरिटीज. इफ यू सी चिंपैंजी एंड ह्यूमंस, both of them, they have almost 98.4% of their genetic composition similar. Only 1.6% वेरिएशन है, जिसकी वजह से इतना डिफरेंस चिंपैंजी और ह्यूमंस में. ठीक है, लेकिन 98%, ऑलमोस्ट 98.5% दोनों का सेम रहता है. सो अगर सेम है तो कुछ फीचर्स, बायोलॉजिकल फीचर्स might be same or might be varying. So what are the similarities, what are the variations? By understanding them, we can understand the evolution of the humans. So that is the reason why we study primatology here. ठीक, then comes paleoanthropology.
or human paleontology. So what is the meaning of paleoanthropology? पैलियो, जब भी आप पैलियो देखते हो इसका मतलब है कि ये एंशियंट, मतलब पुराना, नो पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, ठीक। सो पैलियोलिथिक और पैलियो जब भी आता है इसका मतलब है कि ओल्ड, ठीक। सो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमंस में जो ओल्ड पीपल थे, ठीक है, अंडर ह्यूमन टैक्सोनॉमी हम देखेंगे। जैसे एप्स है, एप से इवॉल्व होते आया, द फर्स्ट इवॉल्व्ड एप दैट वी आर कॉलिंग इट एज ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका क्या फीचर्स है वो स्टडी करेंगे हम, क्योंकि उसका फॉसिल्स मिलेगा और उसको एनालाइज करके स्टडी करके रखेंगे। देन आफ्टर दैट केम योर होमो इरेक्टस। लेट अस से हम टेकिंग मतलब सीक्वेंशियल मैनर में ले रहा हूँ, कुछ मिस भी हो सकता है बट डोंट माइंड इट। होमो इरेक्टस, ठीक है। देन उसके बाद होमो नियांडरथल्स, ठीक है, नियांडरथलेंसिस। देन लेट अस से होमो सेपियंस, देन होमो सेपियंस सेपियंस। इस तरीके से when humans are evolving, so what are the features of this particular species and this one and this one and this one, how they are similar, how they are different, if they are different, why they are different, that can be studied under this particular branch of biological anthropology which is known as paleoanthropology. So यहाँ पर main focus is studying of ancient human remains, क्योंकि उनका डेथ होने के बाद उनका बोन्स वगैरह जो है वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में हमें मिलेगा। देन वी ट्राई टू स्टडी देम, वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट देम, ठीक। लेट मी रब इट हियर सो दैट आई कैन शो यू सम ऑफ द इमेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, look at this, that she is a primatologist who is studying about the primate behavior of chimpanzees, ठीक, gorillas। तो उनका सोशलाइजेशन कैसे होता है, हाउ डू दे कम्युनिकेट, व्हाट इज द काइंड ऑफ सोशल सेटअप दैट दे हैव, ऑल दिस, व्हाट इज द हायरार्की इन देम, दैट इज स्टडीड बाय हर। Similarly, see, look at this. This is what I was talking about, paleoanthropology. The ancient humans, उनका bodily remains का fossils जो है, we try to study upon those. We try to look at what is the cranial capacity, what is this dentition, like उनका दांत कैसे है, do they have canine tooth, like very long canine tooth, do they have a diastema, are their molars and premolars are thick with enamel coating, such sort of things we study in order to know, in order to conclude something about their behavior and their setup, environmental setup. So that is done by the paleoanthropology. Then comes human genetics. जैसे your whatever your features are, like mostly they are influenced by your genetic composition. So in your body, each and every cell, it has the basic building block which is called DNA, ठीक है। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डीएनए, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डीएनए, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जेनेटिक्स इन पासिंग ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ एवोल्यूशन, हाउ दिस एवोल्यूशन हैज हैपेंड, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी, लाइक जब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन पे होता है, दैट ऑल दिस थिंग्स आर स्टडीड अंडर ह्यूमन जेनेटिक्स. Along with that, certain diseases and all of them are studied here. Sonia, primates who have vertebral column. Yes, primates have vertebral column, मतलब ये जो बैकबोन है, all of the primates they have it, ठीक। अगर नहीं है तो then we call them as invertebrates, ठीक। अच्छा, आप प्रोमीसियंस का बता रहे हो क्या? ओके, ग्रेट, we will discuss, do not worry, we will discuss what are प्रोमीसियंस and all, ठीक। Now next, apart from these three, there is one more important sub branch of biological anthropology which is forensic anthropology. See, जब हम biological features of the human beings के बारे में study कर रहे हैं, it is obvious that certain information that we gather can be utilized for facial reconstruction or body reconstruction or even identifying a particular individual or for crime solving. कि for example,
certain X, a criminal, has done certain crime, and in that his fingerprints or his DNA material or whatever it is related to him, if that material is found, then with that we can investigate and we can identify that person and we can solve that crime. ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ही यूजफुल होता है. वी कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स, मिसिंग इंडिविजुअल्स, या एक्सीडेंट हो गया और बॉडी इतना डिसमेंटल हो गया है कि पहचान नहीं पा रहा है. So then we can take the DNA sample and check it. If it is matching with that person, then we can identify that this is so and so person. Similarly, for catching the criminals or even victims of misshapes, मतलब उनका body shapes खराब हो गया. For example, here I have kept it. See, so this is a skeleton. So the skeleton has been with the sophisticated tools, like we have 3D printing and all. So using that, they have done this modeling and finally they have identified this person. ठीक है, ऐसे काम आएगा. क्राइम सॉल्विंग में काम आएगा, पैटर्निटी टेस्टिंग में काम आएगा, मिसिंग पर्सन्स उनको ढूंढने में काम आएगा. सो दैट इज वन एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. सो लुक एट दिस एनालिसिस ऑफ डीएनए हेयर विथ रूट. क्योंकि सिंपल हेयर पे आपका डीएनए नहीं मिलेगा, बट हेयर अलॉन्ग विद द रूट पे आपको डीएनए मटेरियल मिल जाएगा. इवन द डैंड्रफ इट विल हैव योर डीएनए. ठीक है, ब्लड स्टेन्स और इट मे बी सेमेन लाइक स्पर्म वगैरह, बॉडीली फ्लूइड्स और स्किन सेल्स और सेल्स ऑफ बोन मैरो, बोन के अंदर जो मैरो होता है वो, या फिंगरप्रिंट्स, स्केलेटल रिमाइंड्स, ये सब चीजें with sophisticated tools and techniques, anthropologists, forensic technicians, they will analyze. They can tell कि फॉर एग्जाम्पल बोन्स को रिकंस्ट्रक्ट करके ये बता सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर स्केलेटन बिलोंग्स टू मेल और फीमेल. मतलब वहां पर पेल्विक बोन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने. इफ इट इज डिटैच्ड, से इट इज फीमेल बॉडी. इफ इट इज नॉट a detached one, it's a male one. Even the age can also be, we can guess it कि कितना एज हो सकता है बेस्ड ऑन दी ऑसिफिकेशन सेंटर्स इन द बोन्स. ठीक है, ऐसे टेक्निक्स यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. सो दिस आर ऑल द डिफरेंट सबसेक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड. ठीक, first what is biological anthropology, then what is the scope of it, relevance of it, importance of it, and different subsections within this and their applications. These things we have seen. Now इससे related अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा, if you have understood this topic, you can link it and you can write it. कई बार इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपली मतलब जैसे राइट ब्रीफली करके जो 10 मार्कर्स आता है ना, वहां पर दे देते हैं सिंपली बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यू हैव टू राइट अबाउट इट. ठीक है, व्हाट इज द स्कोप, रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस, वट एवर दैट इज, यू हैव टू राइट इट फॉर 150 वर्ड्स. सो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. इफ नो डाउट, वी विल गो टू द नेक्स्ट वन विच इज सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. Audio and video is working fine, right? Okay, no doubt, no doubt. Okay, good, good. Navya, are you there? Sonia, Priyadarshani. Okay, what leads these genetic changes? See, the concept of evolution, when we tackle this, you'll understand genetic changes happen. ठीक है,
in order to adjust, in order to adapt to the environment. ठीक है. And some of the genetic changes might happen randomly. Those random changes are called mutations. ठीक है. So it may be because of like some natural or artificial mutagens. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज जो है उसके वजह से भी अगर सेल के ऊपर लगा, डीएनए मटेरियल के ऊपर लगा, तो वहां का डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसमें कुछ एबरेशंस आ जाएगा. एबरेशंस इन द सेंस एरर्स. तो सम ऑफ देम आर गुड, सम ऑफ देम आर बैड. अगर गुड है यू विल हैव गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड फीचर्स. इफ दे आर बैड then you will have some diseases and your health might be affected. ठीक है. So there are various other reasons why this happens. We will cover them. ठीक है. Priyadarshini, I hope that satisfies you for now. Rest of the thing related to genetics we will cover under 9.1. There is a great debate between nature and nurture. The concept of nature, let me write it here. Nature and nurture. Nurture means environment, how that person is nurtured, what side of a physical and social environment is set up. Nature is the genetics that we are talking about. So what are the changes that happen, उस पे related बहुत सारे studies कर रखा है. Under that section you will get everything. Okay, great. Now let us go to the next important branch of anthropology, that is socio-cultural anthropology. ठीक. See here again I wanted to use this as well, ठीक है, to explain it to you so that you get to used to this. ऐसे ना लगे कि यहाँ पर जो है वहाँ पर नहीं पढ़ाया, ऐसे ना लगे. See, biological anthropology just now we have completed. So under which this paleontology, neontology, like primatology, and then paleoanthropology, ये सब चीजें कवर कर रखा है हमने. And similarly in the importances also we have covered, like see relevance of physical anthropology, this we have already covered. I have already told you evolution का पता करने में काम आएगा. At the same time health, nutrition, defense, इन सब चीज में you can use the information that you can get in the like anthropometric changes जो होता है, उसका measurement जो होता है, that information can be used. Can I make the pen little bit thicker because this is very very thin? I don't know you can see it or not. Okay, then similarly it can be sports anthropology which is known as kinanthropometry. ठीक है. वहां पर बॉडी बिल्ड के हिसाब से स्पोर्ट में कौन सा स्पोर्ट में ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ये भी डिटरमाइन करते हैं हम. ठीक. नेक्स्ट scope of this biological anthropology I have discussed paleoanthropology, then living primates का स्टडी कर उनको कंपेयर करना. Osteology is the study of bone centers like ossification centers to understand like age और उनका सेक्स वगैरह डिटरमाइन करने में काम आएगा, ये भी बताया था मैंने. So these are all the some scopes or applications or relevances of this biological anthropology. Apart from this particular thing I forgot to mention there. See, 20th century onwards there is a change in the nature of physical anthropology or biological anthropology. कैसे? Before 20th century biological anthropology or physical anthropology, it was focusing on only you can say metrics. For example, अगर एक बॉडीली रिमाइन मिला है, फॉसिल मिला है, तो उस टाइम पे क्या करते थे, उसका हेड क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, उसका नोसल इंडेक्स कितना है, या उसका सेफलिक इंडेक्स लाइक हेड का यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, उसका रेशो वगैरह कैलकुलेट करना, उसका दांत का डेंटिशन का कैलकुलेट करना, और उसका बॉडी हाइट कितना है, ये सारी चीजें इस पे फोकस करते थे. दे वर नेवर इनटू दैट जेनेटिक्स. बट 20th century onwards, मतलब 1900 के बाद, so there was this evolution of the genetics that has given a boost to this biological anthropology. Many things they came to like examine how this has happened, why this has happened, all these things they try to link it with your genetics, your DNA. For example, Washburn, ठीक है. So this person has done the same sort of like experiments and moved from this morphic मतलब measurement वाला से
दूसरा टाइप पे, जैसे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स पहले होता था, वहां से क्वालिटेटिव पे लेकर आ गया था. Then they started comparing the things. So that has happened. That is a new boost to this biological or physical anthropology. ठीक. Is the stream working? Is it online? Yeah, online working. A little bit of hiccup in between. ठीक है, it's working. Yes. Then this we have discussed. Let us see the socio-cultural anthropology. See, socio-cultural anthropology, like I said, it has both, it wants to study both the society in which humans are living and the culture of the humans. That is the reason why combinedly we say socio-cultural anthropology. Okay? And here, look at it. The scope of it is, see, let me zoom it a little bit. See, the scope of it is, mainly it focuses on the primitive societies and non-literate societies. क्यों? क्योंकि अगर आपका कल्चर एवोल्यूशन कैसे हुआ है, या सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो भी पता करना है. जिस तरीके से आपका बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करता है, इन द सिमिलर मैनर योर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वांट्स टू स्टडी द कल्चरल एवोल्यूशन. Why and how this culture came into being, how it started changing, that it wants to study. So for that, what it does is it tries to study the simpler societies. Simpler ones means the indigenous, aboriginal societies, primitive societies, tribal societies, non-literate societies, उनको study करता है, क्योंकि they are still living in the same pattern which has been followed by them from like hundreds of generations. So that particular way of lifestyle is still existing there. By studying those simpler societies, we can understand maybe this is how a culture came into being. This is how it originated. This could be the significance of this particular cultural element in this particular society. ये सब स्टडी करने में काम आएगा. ठीक. So for that, what we have is, see again, this has many sub branches. Ecological anthropology, which is given by Julian Stewart, is one of the evolutionist. लेकिन ये classical evolutionist नहीं है, neo evolutionist है. So don't worry if I am saying some anthropologist name और उनका school of thought बता रहा हूँ, तो don't worry, वो सब हम anthropological theories में cover करेंगे, तब आ जाएगा. Here I am just using those names so that you can also get familiarized with those persons, और फ्यूचर में आपको ये इतना बर्डन सा नहीं लगेगा, इतने सारे नेम्स याद रखना है या इनका वर्क याद रखना है, ऐसे बर्डन सा नहीं रहेगा. सो कंपैरेटिव टू हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, हियर द नंबर ऑफ पीपल एंड देयर वर्क इज वेरी मच लिमिटेड, और एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप. ठीक है, राइट. सो एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, cultural anthropology. Social anthropology, it wants to compare different societies. It may be contemporary societies or it may be pre-literate societies, मतलब जैसे tribal societies है, or it may be ancient past societies. आर्कियोलॉजी से कुछ वहाँ से कुछ एविडेंसेस मिलेगा और वहाँ से उन लोगों का, उस टाइम पे जो लोग थे, उनका सोसाइटी कैसे था, कल्चर कैसे था, ये वाला स्टडी करेगा. ठीक है. सो दैट इज the scope of social anthropology and cultural anthropology. Apart from that, there is psychological anthropology. So what is the meaning of psychological anthropology? It tries to understand how the behavior of individual is influenced by the culture and society, and how culture and society is influenced by an individual behavior. Are you understanding? To and fro. मतलब एक इंडिविजुअल है, okay, this person दोनों हैंड उस साइड रखा है, take it that way, and there is a society and the society has culture. Now this particular person has a kind of attitude, a behavior, a personality. Let us say he has a personality. Now how this personality is molded or it is being created by the norms of this particular society and the cultural elements, how this has happened, and how this personality of the person is contributing to that society and culture. So both of them can be studied here.
under psychological anthropology. Then comes your ethnology. ethnology मतलब जो ethnic elements होता है उनको compare करते हैं. ethnic elements में it may be language, it may be culture, it may be उनका religion, it may be political organization, economic organization, वो कैसे है different societies में. And what are the similarities between two societies? What are the differences? Why that differences? Why that similarity? These things are studied under your ethnology. Then ethnography जो है, it's like a detailed description of a particular community, a particular region, about their culture and everything के बारे में डिटेलली लिखते हैं. ठीक है. So these are all the different things which are part and parcel of socio-cultural anthropology. Apart from this, here you will be having, see, familial anthropology, that is like how the comparative study of families in societies, how this particular family is behaving, what is the nature of this family, what are the different types of families, nuclear family, joint family, or you can say कुछ ऐसे होता है कि मतलब दे आर नॉट बाई ब्लड और बाई मैरिज रिलेशंस नहीं होता है, बट दे विल बी स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन विच इज कॉल्ड हैबिटेट. ठीक है. लेट अस से योर पीजी इज एन एग्जांपल. ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट है, इफ यू आर स्टेइंग इन अ पीजी, देखो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका ब्लड रिलेशन भी नहीं है, दूसरा मैरिज रिलेशन भी नहीं है, बट दे स्टिल स्टे इन वन रूफ. ठीक है. सो ऐसे भी कुछ है. एंड मैरिज, how the marriage has become basis for a family, what is the relation between family and marriage. So those things are, matlab all the things related to family are studied here. Then comes your economic anthropology. So here what we will be studying is the economic functions, how economy came into being, what is the means of production, consumption and distribution in the societies, how they are similar, how they are different. That thing is studied here. And how economy plays an important role in the social organization, that is studied here. Okay. Then similarly, political anthropology, which talks about how the polity came into being, how the political setup came into being. See, when we are talking about primitive people, ancient people, they did not have this sound society. अगर society ही नहीं है, मतलब group of people ही नहीं है, then there is no concept of ruling or a state politic. ठीक है. लेकिन बाद में सोसाइटी बना था, देन ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और फैमिलीज दैट हैज बिकम लिटिल बिट ऑफ बिगर वन विच इज कॉल्ड बैंड. तो उसके बाद ट्राइब बन गया है. देन ऐसे ऐसे करके फाइनली योर मॉडर्न स्टेट बेस्ड पॉलिटी, जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. उतना तक कैसे कैसे डेवलपमेंट आया है. अभी भी कुछ ट्राइबल लोकेशंस है, कुछ प्रिमिटिव पीपल है जिनको they don't know about this democracy, they don't know about this ruling class, they do not have any rulers. So वहां पर how is this law and order is taken care of, how social control is taken care of. So that will be studied by political anthropology. ठीक है. So here also we will see very good and very important and funny examples. Let me tell you one example, one case study. See, in the northeastern communities or even in Africa, there are some tribal communities. तो अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, no, to justify that what they do, they actually like क्या बोलते हैं, tit for tat, you know this. ठीक है. कहाँ पर लिखूँ मैं? Okay, tit for tat. So what is the meaning? अगर किसी ने, आपका कोई गलती नहीं है, किसी ने आकर मुक्का मारा है, so somebody has slapped you, then it is found that you have no mistake in that, then that is wrong from that person, it has to be justified. For that what they do, तो आप भी वापस मारो, you also break him. और उसने आपका आंख तोड़ दिया है, you also break his, no, you also take out his eye. और उसने मतलब कुछ ऐसे मारा है, खून निकलने लगा, you also break his nose and bring out that blood. So then it is, मतलब हिसाब बराबर हो गया. ऐसे फॉलो करते हैं. There are some other techniques like, मतलब this is for an eye for eye strategy. तो तब क्या होगा, डर रहेगा, अगर मैं गलत करके इसके साथ कुछ करूं
तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ देन डेफिनेटली इट विल कम आउट एंड द सेम थिंग विल कम टू मी। ये वाला डर से कुछ लोग वो वाला गलत नहीं करते हैं। सो दैट इज हाउ इन दोस लोकेशंस दिस लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। ठीक है, ऐसे यस, आई फॉर आई कॉन्सेप्ट, ट्रू, दैट इज ट्रू। कलेक्शन ऑफ द एनिमी स्कल, यस, नॉर्थ ईस्टर्न में होता है, दे हंट दी स्कल, लेकिन अब तो कम हो गया, पहले होता था। And display it, yes, that is true Upinder. Similarly, you know, there is one more community, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए ट्राइबल चीफ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ 2 पर्सन्स आया है, एक पर्टिकुलर मतलब प्रॉब्लम लेकर आया है, एंड बोथ ऑफ देम आर ब्लेमिंग ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल से अकबर के पास जब 2 मदर्स आते हैं, बोलते हैं कि ये बच्चा मेरा मेरा करके जब लगता है, ऐसे कुछ आया है। नाउ तो दोनों क्लेम करते हैं कि आई एम अग्रीव्ड पर्सन, मेरे साथ बुरा हुआ है। तो तब वहां का सोसाइटी क्या कहता है, वहां का चीफ जो कहता है कि चलो आपके साथ बुरा हुआ है ना, आप जोर से रो लो, मतलब यू क्राई। सो बाय द वे ऑफ क्राइंग, जोर से दोनों रोना स्टार्ट करेंगे, एंड एक्चुअली जिसके साथ बुरा हुआ है वो तो रियली रोएगा ना। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दैट, by looking at their emotions and the way they are crying, they can find who is the actual aggrieved person and who is the wrong person, and then justice will be done. ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। we will come to it जब political organization पढ़ेंगे, I think chapter number 4 in paper 1, so उस टाइम पे ये case studies examples लेकर आएंगे, then we will discuss about this. So this is another branch under socio-cultural anthropology. Next, another important one is the religion of anthropology or anthropology of religion. So there, see, religion is very much part of your culture. ठीक है, धर्म के बिना मतलब it has become very very important. Unless you are a नास्तिक जो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, then वो लोग धर्म वगैरह फॉलो नहीं करते, but otherwise the religion has become very much part and parcel of the lives of the people. Now here anthropologists, what they do is how this belief of religion came into being. What is the origin of religion? In the initial days, how they used to worship, what are the different characteristics, what are the different forces, what is the role of them. So all these things they try to understand. Similarly, if there is any ritual, any rite, why that is performed, how that is performed, those things is studied under here. Okay, that is anthropology of religion. Similarly, ecological anthropology, which studies about the interrelationship between ecology and culture. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। The people who are living in cold areas, ठीक है, have you looked at their clothing? Generally उनका clothing कैसे होता है? They see, for example, me, day before yesterday I was in my formal clothes and I was teaching to you. Today I'm in my winter clothes because ठंड बढ़ गया है दिल्ली में, ठीक है। So as the ecology setup is changing, it is becoming severe, then some of the cultural practices like ये winter wear पहनना, this is my cultural practice, right? Wearing of the cloth is one of the cultural practice. Similarly, if you go to the polar region, जहाँ पर throughout the year there is snowfall or there is permafrost, तो वहां का पीपल देखो, देयर फूड हैबिट से लेकर दे कंज्यूम फैट हेवी कंटेंट फूड, ताकि फैट डिपोजिशन अच्छे से बॉडी में हो जाए, एंड फैट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर, सो दैट द एस्केपिंग ऑफ द हीट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक, सिमिलरली द क्लोथ्स दैट दे वेयर, एनिमल हाइड से बनाए हुआ क्लोथ्स या फर से बनाए हुआ क्लोथ्स पहनते हैं। सो हियर द इकोलॉजिकल सेटअप, is it affecting the culture of those people or not? Yes. So that is the meaning of this here. Then similarly, medical anthropology, so it is concerned with biocultural understanding of humans and their work in relationship with health and disease. See, for this I was giving the example of बाइगा कम्युनिटी पर्सन, जब तक वो बीमार होकर बेड पे नहीं गिर जाएगा, मतलब चल नहीं पाएगा, तब तक अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। दैट इज अ सोशो कल्चरल बिलीफ, जब तक मैं चल रहा हूं तब तक मैं बीमार नहीं हूं, आई एम वेरी मच हेल्थी पर्सन।
तो ऐसे बहुत सारे हैं बिलीव्स हैं। कुछ लोग सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं ताकि उनको फास्ट रिलीफ चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत दे वांटेड टू गेट वेल। तो ऐसे चीजें हैं, दोस वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। सो दिस इज द फील्ड विच डिस्कसेस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन with the socio-cultural practices, that is also studied. See, all of this is studied in order to understand human nature and behavior as part of individual and part of the society. Okay, so that is another important branch of your socio-cultural anthropology. Okay, if you have any doubts in here, please put it forward. I'll discuss about it. Okay, yes, socio-cultural anthropology. This is what we have discussed. See here I have added this. What is the goal of socio-cultural anthropology? ठीक है, look at it. It wants to study that similarity and differences of cultural and societies. Primitive societies को study करके उनका culture कैसे passing on हो रहा है और कैसे existing हो रहा है और how it came into being, origin कैसे हुआ है, these things के बारे में study करते हैं. Similarly, reconstructing of the history is done here. And search for universally valid social laws. मतलब कुछ functions है, कुछ institutions है जो universally exist करते हैं. For example, family is one of such institution which you find it every society, in every society, जहां भी चले जाओ, ट्राइबल से लेकर मॉडर्न सोसाइटी तक, दुनिया का कोई भी कोने में चले जाओ, family is one institution which you can always find it. ठीक है. Similarly, marriage is another institution which you will always find it. Maybe the form, the type, the variety may be different, but that is existing in almost all societies. So ऐसे universally valid laws, institutions के बारे में study करना है, इन सब चीज के लिए काम आएगा socio-cultural anthropology. So these are all the points and important inputs from here. Okay, all clear, Ayush? Thank you. Upinder, no doubt. Sonia, no doubt. Okay. Priyadarshini, are you there or are you disconnected? Navya, are you there? Is there any doubt? Okay, if you have any doubt, I'm going forward. If you have any doubt, put it in the comment box. I'll resolve it. Okay, let us go ahead. Let's see the next one, which is archaeological anthropology. Okay, see, archaeology, let us go by the word. See, यहाँ पर archaeos, it has derived from two Greek words. One is archaeos, it means ancient. Logos means study of. So it is study of ancient remains. That is archaeology. I'm not talking about archaeological anthropology. Archaeology studies about all the ancient remains. Now, what does archaeological anthropology studies? It studies about ancient remains of human beings. कई बार ऐसे होता है कि ancient remains animal का हो सकता है, ये पेड़ का हो सकता है, कुछ और का हो सकता है. तो उसमें archaeological anthropology is not so interested, but it is very much interested in the artifacts which are related to the humans. ठीक है, so that is the focus of it. So it wants to study the human activity in the past. वो लोग कैसे रहे थे, कहाँ पर रहे थे, ठीक है, what is their lifestyle. For example, look at this. This is a digging, an excavation site under which many pottery, many artifacts, even the bones found from this site. By analyzing them, they will try to understand what could be the society, nature of the society, and what is the nature of political and economic organization of this particular people, when they lived, at what time period. So वो time calculate करने के लिए भी sophisticated tools use करते हैं. For example, dating technologies वगैरह use करते हैं, मतलब direct और indirect dating technologies है, absolute और relative technologies, वो वाला study करेंगे 1.8 में हम. तो उस basis पे हम we try to understand the past of the human beings, how they are connected,
and in that process we try to understand how they lived, what is their society, is there any sort of religion or political or economic organization among them. These things we understand. And this prehistory, like history is what is written, what has happened and what is written, that is history. Now written record से भी पहले जो बीत चुका हुआ हिस्ट्री है, that is called prehistory, and that is not written, so we do not have written evidences of it. Rather we have what we have the materialistic evidences which are hidden in the mother earth, ठीक है, which are called artifacts or ecofacts, क्योंकि सॉयल लेयर पे लेयर बनते जाएगा और उस लेयर के अंदर सबडक्ट होकर ये सारे आर्टिफैक्ट्स रह जाएगा and they will be fossilized form में या intact रहेगा. And when we are digging, we accidentally find it, then we do the excavation and then we take out and we try to study the tools, pottery and other material left by the humans in order to understand their society, their culture, their behavior, their physical features and all of them. ठीक. So that's why your archaeology and your paleoanthropology, both of them are closely linked. क्योंकि पैलियोएंथ्रोपोलॉजी भी क्या स्टडी करता है, द एंशिएंट ह्यूमन बॉडीली रिमेन्स को स्टडी करता है, और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, वही एंशिएंट ह्यूमंस बट बॉडीली रिमेन्स नहीं है, उनका टूल्स वगैरह जो यूज किया था उन्होंने उस पे ज्यादा फोकस करता है, सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सोशो कल्चरल सेटअप ऑफ दोस ह्यूमंस. ठीक, दैट इज अनदर डिफरेंस. सी, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड विद ईच अदर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. यहां पर कोई डाउट है? इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच, क्योंकि इनिशियली एक टाइम ऐसे भी था एंथ्रोपोलॉजी मतलब लोग मानते थे कि इट्स नथिंग बट आर्कियोलॉजी, जाकर डिगिंग करना, फाइंड आउट करना, यही मानते थे. बट बाद में इसका स्कोप बढ़ गया है. नाउ इट हैज बिकम ए डिस्टिंक्टिव वन. ठीक है, यहां पर भी देखो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का रिलेवेंस आई हैव गिवन, इंपॉर्टेंस आई हैव गिवन, द पॉइंट्स which we have discussed the same points here. ठीक है, नाउ इसमें भी देखो ओल्ड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, न्यू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ओल्ड वाला क्या था, मेनली 1916 से पहले है. इट वाज टू स्टडी द एक्सटिंक्ट कल्चर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, लाइक जो खत्म हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है, उनके बारे में ज्यादा फोकस करता था. एंड लाइक इट वाज लाइक नॉन इंटरप्रिटेटिव, इंटरप्रेट वगैरह कुछ नहीं करता था, लेता था, मेजर करता था, बता देता था, एक रिकॉर्ड रख के छोड़ देता था. लेकिन नया वाला जो है आफ्टर 1960s ऑनवर्ड्स, इट मेनली डिपेंडेड ऑन लॉजिकल डिडक्शंस. मतलब कोई भी एक कंक्लूजन करना है तो उसका एक लॉजिकल रीजनिंग, व्हाई दिस हैज हैपेंड, व्हाई इट कुड हैव हैपेंड, ऐसे लॉजिक बेसिस पे एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे ये थ्योरीज वगैरह देना स्टार्ट किया था. दैट इज व्हाई इट इज like it is more interpretative in the nature. ठीक, so this is the difference between old archaeology and new archaeology. Then ethno archaeology is another important thing which we will understand about this in your paper 2. paper 2 में ethno archaeology is your topic, paper 2 में है. इसमें सिंपल है, जैसे ethnology क्या था, एक पर्टिकुलर एथनिक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, वही ये पुराने टाइम पे जो लॉजिकल बेसिस पे डिडक्ट करके पुराना टाइम वाला लेकर और प्रेजेंट प्रिमिटिव पीपल है उनको देकर, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक एक्सकवेशन करते टाइम एक आर्टिफैक्ट मिल गया है. नाउ फ्रॉम योर नॉलेज यू थॉट दैट पर्टिकुलर, सपोज से ये मिल गया है. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम योर नॉलेज you thought that it is a pen. ठीक है, ओके, इट इज अ पेन. चलो कोई बात नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लो, इट इज ए पेन, ऐसे मानकर आप पेन के जैसे इस्तेमाल कर रहे हो. नाउ द सेम आइटम व्हेन यू गेव इट टू अ प्रिमिटिव पीपल, अ ट्राइबल पीपल हु डज नॉट नो राइटिंग एंड मतलब ग्रेट पीपल नहीं है, उनको दे दिया. नाउ दोस पीपल, उनका परसेप्शन अलग होगा. यू आर सीइंग इट एज ए पेन एंड यू आर यूजिंग इट एज ए पेन ओनली, बट उनका परसेप्शन अलग है. दे माइट यूज इट इन अ डिफरेंट वे, दैट माइट गिव यू सम इंफॉर्मेशन. ये वाला टूल जो आप समझ रहे थे, दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट वो जो समझ रहे
दैट भी मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट दैट हैज दैट एप्लीकेशन एज वेल. जो पुराने टाइम पे लोग थे, they might have used this tool in that manner as well. It is a possibility. See, how many of you seen the movie called Gods Must Be Crazy, the very first part? Just tell me in the comment box. अगर नहीं देखा है तो I suggest you to watch this movie. Very funny and very good movie. It's a kind of, it looks like a documentary but it's a movie. ठीक है? Gods Must Be Crazy. This is the name of the movie. ठीक है? It is available in any of the like, वैसे इंटरनेट में मिल जाएगा और इवन इन यूट्यूब ऑल्सो इट इज अवेलेबल. ठीक है? हाँ, आयुष अगर नहीं देखा है, आई सजेस्ट यू, खाली टाइम जब मिलता है थोड़ी देर के लिए यू वॉच इट. अच्छा है. इसमें द ट्राइबल पर्सन, they do the documentation of these tribal person called बुशमैन के डॉक्यूमेंटेशन करता है. तो वहां पर बहुत ही अच्छे से दिखाया है. एक नो कोको कोला का एक बॉटल, जो ग्लास बॉटल है, वो मिल जाता है उनको, एंड हाउ ओवर दैट बॉटल हाउ दे यूटिलाइज एंड इन डिफरेंट मैनर्स दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट. सो बहुत ही अच्छा है, एक बार देख लेना अगर इफ यू गेट द टाइम. ठीक है? और पार्ट्स ऑफ इट I'll edit and I'll keep it in for coming lectures as a case study. We will use it. ठीक. लेकिन ये वाला केस स्टडी मत लिखना. दिस इज फॉर यूर लाइक जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोल रहा हूँ. ये वाला मत लिखना, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी वाला. इट्स नॉट द एक्चुअल केस स्टडी. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. Then let us go to the next one, linguistic anthropology. ठीक. See, as I said, this is the newest or latest branch, क्योंकि language जो है that developed at the very later stages of the cultural development, and develop होने के बाद it diversified so many languages, so many words. ठीक है? The vocabulary has improved. Now here language has become very much important part of your communication and your culture. If you wanted to pass on the cultural elements from one generation to another generation, then you must have some vehicle to pass on that information. ठीक है? पढ़ लिखा है तो ठीक है, we can write and we can pass it on. But pre-literate societies, primitive societies में अगर ये cultural elements को pass on करना है, how do you do that? It is by the mouth, orally transmit करना होगा. So for that language is very very important vehicle. It's a very very important bridge. So that is how language has become part and parcel of your culture. ठीक. अगर कल्चर के बारे में स्टडी करना है, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना है, if it is the holistic study of the humans, then this language is very much intrinsic part of the humans. So we need to study about the language as well. So that is why this linguistic anthropology came into being. And here what we do in the linguistic anthropology is we try to study the origin, nature, meaning and development of the languages, but not in direct sense of language, but from the socio-cultural setup. What social significance this particular language or the term has in that particular society, what cultural significance that it has in the passing on that culture or communicating that particular thing. उस पर्सपेक्टिव से ये वाला स्टडी करेंगे. ठीक है? Similarly, it focuses, the area of focus is structural linguistics, social linguistics, like social significance of the language, historical linguistics, मतलब historically how the language transformed, how it came into being, all these things. ठीक? So this is one thing that linguistic anthropology studies. Then second thing है, see, language or communication, it's not always verbal communications. Sometimes we can have non-verbal communication. मतलब साइन लैंग्वेज हो सकता है, या कुछ इशारा करना, आई से भी इशारा करना, हैंड से इशारा करना. So such sort of non-verbal communication भी हो सकता है. And this communication is not only exclusive to the human beings. This can even be done by animals, apes, ठीक है, primates. They can also do this.
and we also try to see कई बार देखा होगा आप लोग चिंपैंजी वगैरह को ना साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, उनका वर्डिंग सिखाते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में मिलेगा, यू जस्ट लुक एट इट, they can learn, actually they can perform very well, they learn very good number of vocabulary as well, ठीक है. So that is all about your linguistic anthropology. But when I'm telling about linguistic anthropology, I need to talk about two particular things, two particular approaches. They are called etic approach and emic approach. इससे related question आया था, etic and emic approach. See, what is the meaning of etic and emic approach? Let me take me as an example, ठीक है, I'm an outsider, let me say I'm an anthropological researcher, ठीक. Now I came from a modern society, okay, which is developed society, which is civilized society, let us say civilized, modern or developed or literate society, let me say, and I wanted to go to a primitive society where the people are not well educated, they do not know reading and writing, and they have not been integrated with this particular world, they have been living in isolation, कुछ जंगल में रह रहे हैं, तो वहां पर जाकर उनको स्टडी करना चाहता हूँ. Now I have gone there, ठीक है. Now my language is completely different than the language which is spoken by them, right? Completely different than the language spoken by them. Now when I go there, I'll have two kind of perceptions. One is, as an outsider, my perception, I may not be able to understand what they are speaking, what they are doing. It takes some time for me to understand their language, learn that language, ठीक. So initially my perspective, my opinion will be as an outsider, so I will be like a alien. So वहां पर even if they are greeting me, since I'm not able to understand their language, I may perceive it, they may be threatening me, maybe they might be scolding me or abusing me, ऐसे हो सकता है, perception हो सकता है, because of lack of communication. So ये जो outsider का perspective है, that is called etic approach, etic based language approach, ठीक है. मतलब as an outsider you will try to look at what is the language they are speaking, what is the significance of it, ये वाला. और दूसरा emic, being an anthropological researcher, you have gone there and without judging their culture on comparison with your culture, you started studying about them. Then वहाँ का जो लोकल वर्ड्स है, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये वाला वर्ड, इवन इफ यू डू नॉट नो ये वाला वर्ड का मतलब ये होता है, ये इधर साइन करके पता कर लेते हो, लिख के रख लेते हो. देन सेकंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट and try to see why that particular word has been given that name and how it is significant, what is the social and cultural significance of it. ऐसे उनका perspective से, as an insider, as a member of that particular society or a tribe, if you are trying to learn that, that is called emic approach of language. Okay. So this etic and emic approach, it's very very important while studying the language. Okay. So please remember this. Now here, these anthropologists, they have become a very important bridge between these two worlds. And यहाँ का जो इनके साथ this will be etic approach, यहाँ पर emic, मतलब from the perspective of this society बोल रहा हूँ. And यहाँ से जो language वगैरह, see, these people they will be working as a bridge. यहाँ से जो language सीखेंगे, यहाँ का उनका customs वगैरह सीखेंगे, then उनके रिसर्च बुक्स के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू द सेम विल बी एजुकेटेड टू द पीपल आउटसाइड वर्ल्ड को एजुकेट करेंगे डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू. देन अगेन यहाँ से जो भी मैसेजेस वगैरह जो भी इनके लिए जो करना है, दैट दे विल टेक एंड दे विल ट्राई टू गिव इट टू दोस ट्राइबल सोसाइटीज. दैट हैपेंस हियर. ठीक है. सो दिस इज द एटिक एंड एमिक अप्रोच विच हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी वंस. 10 या 15 मार्क्स के लिए पूछा था, बट इससे रिलेटेड जो है वो 7th चैप्टर जो लैंग्वेज है उसमें पूरा तरीके से कवर करेंगे हम इसको. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. तो यहां पर एनी डाउट हियर सो फॉर? If you have any doubts, please put it in the comment box. So with that, our discussion on all the major branches of
लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज ओवर. ठीक है. ओके, थैंक यू. ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट. नाउ द सेम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का भी यहां पर भी लिखा हूं. जस्ट लुक एट इट. डेवलपमेंट कैसे हुआ? लाइक सम ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स E.V. टेलर एंड डेल हाइमन, these guys they contributed. ठीक है. And they were the ones initially who started studying about the linguistics, and they started developing language as a separate one, separate stream, and it has a lot of scope क्योंकि language has become a very important communication tool. That is the reason why it has become very very important, and nowadays there are so much of variations in the language. So that's the another thing. Similarly यहाँ पर देखो importance or relevance. Look at this. To understand the thought process of a particular organization or a particular society के बारे में study करना है, this language will help you like in expressing of that particular element through that language. Similarly social behavior पता कर सकते हैं हम, and the study of language of simple societies we can understand, we can see how that language came into being. Similarly the cultural behavior of that person, or the understanding of continuity of the culture, like orally passing on that culture from one generation to another generation. That is the reason why that culture is still existing, still living. So that thing we can understand by the help of the language. You know, there are some things called folklore. folklore कहते हैं, मतलब legends, myths वगैरह. So they are not written, they are spread through the mouth, orally transmit करते आते हैं. So and they are still existing in the societies. So that is another importance or scope of it. ठीक है. इसमें भी देखो the 5 branches are there. These branches are not so important, but हमने cover कर रखा है. पहले वाला historical linguistics है, जो हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज का हिस्ट्री वगैरह इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका डायनामिक्स, उसका जो क्या बोलते हैं डिफरेंसेस वगैरह, डाइवर्सिटीज वगैरह कैसे आया है, दीज थिंग्स आर स्टडीड. ओके. ओ नव्या, सी जहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम आया है वहां से यू वॉच इट अगेन. ठीक है. देन स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू टेल मी, देन आई विल हेल्प यू आउट. आयुष, can Yetik and Emic be connected to the traditional art of storytelling in some way? Definitely it can be. But mainly the thing is, see, Yetik and Emic, even though if you understand the language of the tribal people, still the perception of that particular thing, being a alien language person, even if you know the language of the tribal, still there will be some sort of biasedness. That biasedness creates this Yetik and Emic वाला approach. ठीक है. आपका पॉइंट तो ठीक है, यू कैन लिंक इट. यस यस, ट्रू, दैट इज ट्रू. अनलेस इट इज अ बायोग्राफी, यू कैन ऐड इट एज ए येटिक अप्रोच. ठीक है, दैट इज ट्रू. सी जनरली जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह जब वो अपना पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, वॉट एवर दैट दे हैव लर्नड इन द येमिक अप्रोच, दे आर ट्राइंग टू पुट इट इन द येटिक अप्रोच. ठीक है. वहां पर रखकर ये वाला क्रॉस कंपेयर कर रहा है दो सोसाइटी को. ठीक है. सो दैट इज ए थिंग वी कैन टॉक अबाउट इट. ठीक. रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू येटिक एंड येमिक वी विल स्टडी अंडर यूनिट 7. डोंट वरी. यहां पर सिर्फ I wanted to give the introduction of those two terms, and I wanted to tell you what is the brief meaning of them. ठीक है. एक बात ये हो जाए, then we'll talk about it separately. ठीक है. So this is all about the main branches of anthropology, their significance and all. Now, as usual, for this lecture also, I have 2 questions for you. See, this first question, this is directly from your UPSC 2017 15 मार्क्स के लिए आया है. क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्क्राइब मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एलाबोरेटिंग ऑन एनी वन ब्रांच. मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. देन डिस्क्राइब्स द
ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कितनी ब्रांचेस है? 4 है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो, देन इनमें से जो आपका पसंद है, लाइक एनी वन ऑफ देम, ऑन दैट एलॉबरेट ऑन इट। Elaborate in the sense, what is the nature of it, what is the scope of it, relevance of it, importance of it, if there is any limitation, ऐसे करके elaborate करके लिख लो. So that is the question. It came for 15 marks. Second question is, write a brief note on the following. So you have to write it in 150 words, 10 marks each, under which archaeological anthropology, linguistic anthropology, socio-cultural anthropology, physical anthropology, ऐसे एक एक के बारे में लिखो. ये मतलब आगे भी लिख सकते हो, एटलीस्ट ट्राई दिस वन, ठीक, फॉर दिस क्लास, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट, do put it in the comment box, else we will wind up this lecture here and we will be meeting on the next class. See, this week we are setting up the things. I had a meeting with Jatin sir today as well. Okay, so we are like finalizing. By Saturday you will see that. Okay, already Telegram group has been created and your answers are received by the our front end persons. They will forward it to me. I will check and give you the feedback. Okay, that will happen. Yes, Ayush, what is your question? Others like Navya, Sonia, Priyadarshini, are you there? Navya, see, your comment is you are not able to follow. जहां पर इंटरनेट आपका स्लो हो गया था, प्लीज rewatch it once again, and if you are not able to follow, then ask me in the next class. Okay, next comment is Sonia. By sir, you are not added in the group. Okay, see, as of now I am not added, okay, but soon, but your answers will be coming to me and we will be communicating. Don't worry, we will have even interactive sessions as well, Zoom sessions or Google sessions. We will have that interaction. Okay, Ayush, do these differences in the perspectives also give rise to xenophobia in some societies? Yeah, that's a good question. Sometimes it creates, but the thing is, anthropologists, like being a student of anthropology or researcher of anthropology, when they go into the society, there will be a clear cut guidelines that whatever the biases that are there, we have to leave behind. We have to go with like कल्चरल रिलेटिविज्म, वो वाला एटीट्यूड से जाना होगा. वहां पर जब स्टडी करते हैं वहां का सोसाइटी, वहां का कल्चरल प्रैक्टिसेस, इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैम, बट यू हैव टू बी like patient. You should not judge it from your perspective, your culture. You have to record them as it is, ठीक है, so that you can know why they are doing, what is the actual culture of them, ठीक है. These guidelines are पहले ही दे देते हैं ताकि ये वाला जो फोबिया वगैरह क्रिएट ना करे, ठीक है. That is there. Okay, Priyadarshini, do you have any doubt? No, ठीक है. Yes, Navya, are you okay with that? Just to repeat, and if you are not getting, ask me, I'll help you out. Okay. Okay, Upinder, any doubts? Okay guys, if it is so, let's wind it up here. See you in tomorrow's class, and this Friday I'll try to have one interactive session with you, okay? Rather than class, let us have one interactive session on this Friday. Let us get to know each other very well, ठीक है. So let me know you as well personally, ठीक है, so that आपका मतलब in the preparation, if you are lacking anywhere with respect to the
एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट, आई कैन हेल्प यू आउट. ठीक है. So and from next week onwards, most of the things we will be like settling everything, and this answer writing and your notes and everything will come up to date. See, these notes I have sent it in the morning, and they told me when I went to the institution, the concerned person told me that it has been sent to you guys. Okay. Once again I'll call and reconfirm that this notes has reached you. Okay. And take that notes as a reference point. Even if you are making your notes from this, I have no issue. Even if you are replicating this, I have no issue. Okay. But the main thing is you should learn the subject, the concept. Kyunki it is not this content which is going to help you in the exam, but the conceptual clarity on this content is what going to help you in the examination. Okay. So that is where you have to be more focusing, get the clarity, so that you don't have to find for some content. The content has to come free flowing, उतना grip होना चाहिए subject के ऊपर. ठीक है. So that is our ultimate goal. That's it then. So with that, let me wind it up this lecture. See you tomorrow. Have a very nice day. ठीक है. Good night. Yeah, Upinder, it's in the group. Please guys, the document is in the group. Please access it from there and download it. ठीक है. Okay, see you tomorrow. Thank you very much. I'm going to turn off the stream.